क्या बोलते हैं इसे, लिप पेंसिल. एंड ओके, देयर इज माय बन्नू. आई एम सॉरी, स्टोरेज फुल हो जाती है हमेशा. जस्ट लुक एट इट, just looking like a wow. Back side of the portion like a boom boom boom. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So my channel is all about makeup, and I know it's been a very long time since I've posted any videos. So yeah, I'm back now. In my channel you will see tutorials, makeup video, before and after videos is in a life of a makeup artist, and many fun challenges related to makeup. In today's video I've created this look. This is a no makeup look, and you can see the magic. So yes, without any further ado, let's get into the video. This is me without makeup. This is my before look, and let's start the video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. The first step is to cleanse your face with a wet wipe, or you can just wash your face. So let's start. I know it's winters and we don't like to wash our face, so we can clean it with a wet wipe. Now after wiping our face, we'll just refresh our face with a toner. I'm using a rose water. Wow. Okay, so after using a toner, I'll just apply a moisturizer. After moisturizer, I'm gonna prime my face with a primer. Primer बहुत ज़रूरी होता है हमारे फेस के लिए, because it fills our pores. अगर हम pores primer लगाए बिना मेकअप करेंगे, then you know all our product will get settled in that गड्ढास and it will not look nice. तो प्राइमर बेसिकली हमारे सारे पोर्स को फिल कर देता है एंड बेस को फ्लॉलेस बना देता है. इट इज़ अ मस्ट स्टेप. So after the primer, I'm gonna do my makeup with the concealer today only because it's a no makeup look. तो just ये सारे spots को cover करने के लिए मुझे चाहिए. So I'm gonna use a Rare Beauty, concealer. This is of my shade and the coverage of this concealer is just amazing. I'll just apply it to the areas जहाँ पे मेरे spots हैं. Dark circles तो खैर नहीं था, थोड़ा सा discoloration है. I'll apply this concealer and make my face even. So हम mirror ले लेते हैं. Here. Exact मेरी shade है ये. I'll just Okay, so now after applying the concealer, एक टैप blender लेंगे and we'll blend it to a see that कितना perfect match है. See, can you see मेरे सारे marks छुप गए हैं. अच्छे से हम डैब करके blend करेंगे into our face. Back side of the portion लेके boom boom boom. और pointed area लेके हम under the eye. See now, अब मुझे थोड़े से अपने फीचर्स को हाईलाइट करना है. सो आई यूज़ अ स्विस ब्यूटी कंसीलर. मतलब आई लव दिस कंसीलर सो मच. आई जस्ट यूज़ इट टू हाईलाइट माई फीचर्स बिकॉज मुझे थोड़ा सा हाईलाइटेड पसंद है. आई पुट इट अप्लाइड ओवर हियर, नोज के पास, फोरहेड पे अ लिटिल बिट, चिन. आई ब्लेंडेड. ठीक है, pointed area से will blend it near our eyes. Can you see the difference?
this is looking like uplifted and this is looking like थोड़ा सा dark, so इसलिए I've used highlighter. Tap 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 tap. Now look at that, कितना difference है हमारे face पे. So now after this अच्छे से blend हो गया हमारे face पे. Now I'm gonna use a blush, cream blush, and this blush is my favorite. मेरी हर वीडियो में पता हुआ है, रेयर ब्यूटी का. Basically I like my cheeks pinky, so अच्छे से अप्लाई करेंगे. If you don't follow me on Instagram, then please follow me on Instagram. My handle is makeup by Priyanka Gurung. Now we have applied all the cream and liquid products. Now we have to lock the space. अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी because it is a no makeup look. I'll keep it natural. So now I am locking it with a powder. It's a translucent powder from Liqwyd, as you can read. I'm not using a brush today. I just a cream product or liquid product को set करने के लिए I'm just using it. What we will do is we will fill our eyebrows. So eyebrows fill करने के लिए I'm using the L'Oreal का Brow Artist Palette. So I'm gonna take shadows. अब देखो how will I apply. I'll मतलब एंगुलर ब्रश लेके, इग्नोर द हालत ऑफ माई ब्रश, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ तो इसकी हालत ख़राब है. सो आई जस्ट टेक द प्रोडक्ट, आई डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड मैं सेंटर से स्टार्ट करूँगी. सेंटर से बिकॉज हमें स्टार्टिंग में सारा प्रोडक्ट डिपॉजिट नहीं करना है. आईब्रो एक ऐसी चीज़ है, ये हमें सबसे बेस्ट. ऑल्सो कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू सी वेडिंग सीजन का ब्राइड्समेड वाला वीडियो. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड. हल्का सा ब्रश करेंगे अपने आईब्रोज को. सो आफ्टर द आईब्रोज I'm gonna apply blush and the highlighter. So this is my favorite palette. इसमें ब्लश भी मिल जाएंगे आपको. See the shades of the blush. पिंक भी है इसमें, मूड फ्लश नाम है इसका. देन पीचेस भी है. वी हैव पिंक का शेड, वी हैव पीच का शेड. देन वी हैव बोथ द कलर्स ऑफ द हाइलाइटर. वन इज़ लाइटर वन इज़ डार्कर शेड. दिस कैन बी यूज फॉर द मतलब fairer skin tones and this can be used in the darker या medium skin tones. And this is contour, this is bronzer. ठीक है. So this is the best palette, मतलब रीजनेबल भी है एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस पैलेट ओनली. ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट, तीनों चीज़. नाउ आई एम गोना टेक दिस ब्रश, थोड़ा सा फ्लफी ब्रश, ठीक है. एंड देन आई वॉन्ट माई चीक्स टू लुक पिंकी, सो आई टेक द पिंक कलर एंड आई डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एंड आई अप्लाई इट लाइक दिस. कैन यू सी? Now I'll apply a highlighter. I'll take this one, a little darker shade. I can apply it with my finger also. See, अगर आपके पास highlighter brush नहीं है तो can you see? इधर मैंने हाथ से किया है, इधर मैं ब्रश से करूँगी. ब्रश का तो अलग ही मज़ा है गाइस. ठीक है. थोड़ा सा नोज में, थोड़ा सा यहाँ एंड थोड़ा सा यहाँ. Now I'm gonna curl my lashes and difference देखना आप lashes में, ठीक है. अभी नहीं, मस्कारा लगाने के बाद. So these are my lashes. पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा. I'm gonna curl it. Be careful, ठीक है. बहुत लोगों को इससे डर लगता है. Now I'm gonna use this Maybelline Hyper Curl. ठीक है. हम इसको ऐसे लेंगे एंड विल नॉट डैप डैप इट. एयर आ जाती है. विल जस्ट टेक इट आउट एंड विल जस्ट वाइप ऑफ द एक्स्ट्रा
ठीक है, उसके बाद we look down in the mirror and head upwards. Okay, so now I'll just show you. Can you see the difference? ये वाली देखो और ये वाली देखो. It's just one coat. ठीक है, I'll do it with the other one also. See the difference? Oh my god. Can you see that? Oh my god. Now the last step is left is the lipper. So for the lipstick, I'm first gonna apply my favorite क्या बोलते हैं इसे, lip pencil. This is, देखो कितना यूज़ कर लिया मैंने इसे. This is K Beauty का in the shade Fame, my favorite shade. अब देखो, I am using my Berlin का most, it's seductress. Can you see that? अभी रुको. See? So the last step is to apply a makeup fixer. Makeup fixer is a must. नहीं लगाओगे तो उड़ जाएगा मेकअप. ऐसा नहीं है गाइस, बट दिस यू नो, जितना भी आपका मेकअप केकी लग रहा होता है ना, यू विल अप्लाई दिस एनी स्प्रे मेकअप फिक्सर, आपका मेकअप वहीं एकदम बिल्कुल फ्लॉलेस रहेगा. सो एज आई शोन यू अर्लियर, आई एम यूजिंग दिस रेयर ब्यूटी का 4-in-1 मिस्ट. सो पहले शेक इट एंड देन फ्रॉम अ डिस्टेंस स्प्रेड. Let it dry and look at that difference. देखा पहले क्या था और अब क्या है. ऐसा मेरा सूखने में टाइम ले रहा है, तो I'm gonna use a cutie thing. देखो oh, say hi to my cutie Bannu. So here's the final look. I hope you all loved it. तो हम products देख लेते हैं हमने कितने यूज़ करे. I have used 10 products and this look. Oh my god. ये मेकअप कहीं पे भी लगा के जा सकते हो. So yeah, I hope you all loved my makeup tutorial. It is a no makeup look tutorial. And for more, you can follow on Instagram. My handle, I'll put the link in the description box. और ऐसे भी बता देती हूँ, my handle is makeup by Priyanka Gurung. And comment down कैसा लगा आपको, and also comment down what all videos you want to see. And it's my request, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And for more videos and updates, you can press the bell icon below. And yeah, I hope you all loved it. Bye guys. So yeah, bye.